I need to check it once that whether it is working or not. Let me check, because this is the first time we are coming live from YouTube. So if anyone is watching us, then you can put on your chat box messages on chat box, so that it will be easy for us to know, like for me to know that somebody is watching. And I'm extremely sorry that I had less idea, and I have less knowledge of YouTube and how to go live on YouTube. This is the worst thing. I have no idea. So I am like, these kind of things are happening. Because of this only I could not wait, I'm just putting a message here. Okay, so okay, now I think I have to send the Sadala Publications YouTube channels this thing studio, uh, because of after that only I think we will be visible to other people. Get the app. Okay, so yes, there is something called studio, and otherwise I cannot be seen live. Okay, chalo, let's start the session, as we have no people now who have joined us. But I'm pretty sure that eventually people will be watching the recording, and they will be understanding that what was the main purpose and the importance. If somebody is looking at looking this or watching this video, they can put a message here, because this session is totally on Sawal Jawab thing. Like you will be asking me questions and I will be answering that questions. It is totally on that. And yes, the main reason for this thing is this only, that we can actually uh, like come together and understand. Like, wait, you can share this link. Okay, chalo, let's start the session. The main purpose for today's session is to understand. I basically wanted this session to be like a very interactive session on YouTube, where you will be asking me questions and I will be answering those questions, those answers. Together with that, I have prepared a roadmap. Okay, like for a law students, what you are supposed to do as you are a law student, what all things you need to do. Those are the things which I will be dealing today, and will try to make it clear and make you all understand that these are the things as a student you need to do. So I am just sharing my screen now, where I have prepared a PPT kind of thing. So yes, these are the top 5 legal strategies for law students, which the Sadala publication has tried and like to bring before you all. Before we start the live stream, let me tell you who we are, what we do, basically what Sadala Publication is. So, Sadala Publication is an innovative edtech platform and a blind peer review journal dedicated to advancing legal search and scholarship. We aim to unfold a novel panorama in the ever evolving field of law, pushing the boundaries of traditional legal studies and transcending the conventional periphery of established doctrines. So basically, these are two hi-fi words. I'm just telling you. This is how Sadala publication is. Like they put a lot of hi-fi words and makes things very hard to understand. But I'll tell you in a very short form. The Sadala publication is the innovative edtech platform wherein we provide certification courses. We also try to bring more opportunities for people, uh, like
students, basically student of law, that what all opportunities they have in this field. Together with that, we are also a double blind peer review journal. Now, before we get into what is double blind peer review journal, I just want to tell you all that we are a publication house. Okay, so we basically publish your blogs, articles, books, journals, everything. Now, what is double blind peer review journal? So I'll make it clear. So double blind peer review journal is like, so if you are one of the peer, like if you are one of the person who is sending us the uh, blog or an article, you will not be aware of who the person who will be reading it, or who is the person who will be checking or reviewing it. Okay, so what we do, we directly share it with one of the scholars, and either he's a professor or something. So we'll be sharing that thing to a professor or somebody. After that, he will be reviewing it and he will be suggesting us some changes, and we, together with that, we don't only send it to one person, one peer, but we also send the particular journal to two of the peers. So that is why, and then these two people share us the insights that these are the things which is supposed to be changed in this particular blog or article. And then we send the same thing to our uh, peer who has basically shared the blog to be to blog with us to get it published. So basically, the first party doesn't know who are these two parties, and that is why it is blind peer review journal. As it happened two times, like we shared it with two different reviewers, so that's why it is called as double blind peer review journals. So basically, we are that we try to get best articles or best blogs, so that when people or somebody is reading that, they understand that yes, this is the best thing which we where we can rely upon. So yes, Sadala publication is that. The most important thing about myself. So my name is Anmol Anand, and I'm an assistant professor at Netaji Subhas University. I'm also an editor at Sadala Publication. Previously, I practiced at Jharkhand High Court. I hold a master degree from Christ University and BBA LLB from KLE Societies Law College, Bangalore. It was registered under KSLU. It was affiliated under Karnataka State Law University. So yes, about today. So today I will be taking your sawal and jawab, and I will be giving you jawab, so that you can keep asking me sawals, and I can like answer all the questions what you are asking me. Okay. So Sanoj is like, good evening. Good evening, Sanoj. Uh, yes. So let's start again. Like, where were we? We were here. So as I was telling that today's session is all together on Sawal and Jawab. I want you all to please put your questions in the chat box, so that at last, when we will be there, we will try to clarify all the answers. We'll get you all the answers, whatever the questions you have asked. But before that, as I have already promised you through that thumbnail, if you have seen that, I will be teaching you five strategies for a student of law, to how to unlock that panora, like when you will enter in this market after your law degree, how you need to be equipped yourself, how you need to be like, yes, now I'm a master, I can get out and I can threshold, I can get more of the cases. So today, basically, I will be doing that. Today, I will be giving you those, basically only five strategies I will be giving you, and in that, the first strategy which I will share with you is gain practical experience. This is the first thing I'll tell you, because law is something which can be read on mobile through books, or it is something you can read it. But the most important thing, it is very much like you need to know this. The most important thing about law is where to apply. Above all, how to apply. Above all, when to apply. These are the three questions which you will get to know when you will get enter, or you will get in this real world. And that is why the first strategy which I am giving you people is get
practical experience. Either it can be through internships, either it can be through moot courts, client counselings, the different zoners you have, different competitions you have at law colleges. So if I'll say this in this sense, that internship is one of the point. Second point is keep yourself involved in college activities. Whatever activities they are getting, you do it. Either it is any competition related to moot court, or any extempore competition, any debate competition. If it is a singing competition, go for it. If it is a ramp walk, go for it. If it is a, if you're thinking that I don't have any talent, sir, so what should I do? You do cooking without fire, but do something. That is the most important thing. Exposure is very important. And that's why I'll tell you that firstly I'll explain you internship, and then I'll say about moot court. Intern yourself at law firms, courts, government agencies, and corporate legal departments to gain hands on experience. This is the most important thing, guys. I'm telling you. Start involve yourself at internship from day one. This is the most important thing. If you have any questions related to this point, you can put those questions in the chat box, so that at last I will answer all the questions. And I'm really sorry that through that link, that first link which I posted on the WhatsApp channel and other places, I could not come live in that particular link. I had to make a separate link. Now I'm really sorry for that, and that is one of the reason that why there are only 7 people. I'm telling you, that is the only reason. Otherwise I'm pretty sure that I saw that 4 or 5 people were waiting, so it would be like 10 or 15. But let's avoid that point. Let's not get into it. So let me tell you that this is the first thing which you need to do is involve yourself in internships. Together with that, participates in moot court competitions, mock trials, legal aid clinics to sharpen advocacy skill. Now you must be getting thoughts like those people who are new in this field, like first year grads. They must not be knowing about moot court, must have heard about it, but not be knowing about more about it. So I'll tell you now, what is moot court. Moot court is basically a dummy court where you get hand in hand question. You get a fact sheet. Like for example, if I'm saying that I am a black guy from Argentina, and that Argentina is assumed to be India, and I applied for a job, but I got rejected for that job because I was black, and this was the main reason I did not get this job. So if in particular that whatever country I'm from, and if that country is having Indian laws, so can I file a writ or a PIL or whatever what I can file? So you need to be that person, advocate, and you have to draft your petition from both the sides. That's the most important thing. Like you have to draft from both the sides, from the victim's point of view, and also from the state's point of view. That state must be having some point, like why I did not admit this black guy in this particular organization, either as a student or as a person who is working. So these are the two things like in moot court basically happens. And moot court is basically more of constitutional in nature. It is having constitutional cases. So most of the time I'm telling, it is having constitutional matters, and that's why it is called as moot court. The most interesting part here, if you will understand, is now in this fact what I told you right now, you must be understanding that yes, something right to equality happened. Like the person was discriminated on the basis of sex, color, his basically color. So yes, Article 14 has been infringed. Now the question before your hand is, how will you file a case in the court? Where you will file it, how you will file it, what you will ask from the court. So these are the three questions which comes, where you will where in the moot court you will answer those questions, where while you will be preparing your memorial and you will answering those questions. Second point is mock trial. Basically mock trial, the word trial, understand this. Mock, you understand, again a dummy thing. Now, trial, you understand. Trial, basically, you must have heard in CRPC and IPC and other stuffs. Basically, in CRPC. What is trial? Trial is basically criminal trials.
either session, summary, warrant, whatever session, like trial. So basically, a trial, for example, if I'm quoting again here, that a guy killed another guy and now he's in the jail. You're not, you need to know from when a trial starts. If I'm talking about sessions trial, it begins once the charges have been framed. So basically, from that time, the trial will begin. Basically, the prosecution will start open its statement, and then the trial will begin when you once the charges has been framed. So basically, mock trial is that, like, you will be having a case in your hand. The guy is in the jail. And the matter has come before the court from and you are a trial lawyer. So basically, and I'll tell you, in a criminal law now, you will be able to do bail. It will be easy for you to do bail and other stuffs. The most toughest part in criminal law is trial. And if you want to become a successful lawyer in criminal law, then you need to know what is trial. Third thing is legal aid clinic. Legal aid clinic again is one of the most important thing, wherein what happens that you basically go to a village where you do nukkad nataks and other any other way, whatever way you can showcase, like beti bachao, beti padhao. For example, again I'm quoting that I am visiting to a village together with my group. We have prepared uh, some chart on which we have written all those datas, that beti bachao, beti padhao, these things. Sath hi sath, I'm mixing. Okay, tell me, how many of you are comfortable in English only? Like, tell me, uh, is there anyone who is only comfortable in English, or you want Hindi also to be mixed up? Please tell me. कोई है ऐसा जो चाहता है कि भाई सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के पढ़ाइए सर? Because and are you feeling it interesting? Like, please guys, put your uh, right there. I'm writing something. See, I have written like anything. English. Okay, Sanoj is telling English. Okay, Atul is telling English. Chalo, let me tell you. So both English and English is having last में English na. So I will be doing something like mixing it up. Okay. So huh. So legal aid sale, basically, what is legal aid sale? तो बेसिकली यही होता है कि यू गो टू अ विलेज, यू do some nukkad natak. Like, nukkad natak is one of the ways where you attract the crowd. So the crowd has been attracted towards you, they will be coming to you, and then once they will have this knowledge that you are a law student, they must be having some questions in their head, like भाई में लड़ाई हो गया, जमीन के लिए कोई विवाद हो गया, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, बीबी से लड़ाई हो गई, तो दे विल बी हैविंग डाउट्स एंड दे विल बी थिंकिंग लाइक फ्री में पैसा लीगल एड मिल रहा है रे, लाइक चलो पूछ लेते हैं सवाल. They will come to you, and you will be having a fresh question in your hand, fresh facts in your hand, and you need to answer those. Like basically client counseling की तरह आप उसको काउंसलिंग दोगे, यार एक फ्री काउंसलिंग दोगे. यस, फ्री काउंसलिंग पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे. देयर इज अ पॉइंट, आई थिंक थर्ड और फोर्थ पॉइंट में वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, like free counseling, because counseling helps you a lot, because it helps you in sharpen the advocacy skills. So legal itself is one of the very important point. Now, yes, third point, work under senior advocates or judges to understand real world legal practice. I need not say much about it. It again comes under internship only. Do a judicial internship under any judge, so that you will understand, you will see a world from his point of view. Like, why so much of delay? Why he is allowing, why he is giving time? Huh? You will understand those things. What happens when he writes the judgment? So basically these things are very important. Then comes a very important point, that is doing internship under a senior advocate. Yes, now the question is, sir, who is the senior advocate? A person who is having 60 years of age is almost senior, right? He is not senior, he's about to retire, so obviously he's a senior guy. A senior advocate means a advocate who has been recognized either by the High Court or the Supreme Court or the highest district court to be a senior. How to recognize them? You need to watch their gown. Like, if you will see the lawyer's gown, you will understand that the senior advocate's gown is different from a junior advocate, that is your gown or your immediate senior guy.
So you will see the difference, that that ribbon which comes out of the gown, that is totally different. The your as a first year grad, when you will wear the gown, you will have a gown which will be not be attached to this side to this side, like this shoulder to this side. So for an senior advocate, it is there. So the entire gown is connected, and that's how you can easily recognize a senior advocate. Now comes the second point, which I want to discuss with you people, is build a strong professional networks. I'm telling you, build a strong network. And today, in today's world, networking is the biggest job. People are making networks in every place. If you are a trader, they have a network. If you are a advocate, you need to have a network. Like for example, I'm quoting, like if you will give me a case of Gujarat, sir, can you file a case in Gujarat? Yes, I can, because I have friends there. I Can you, sir, file a case in Andhra Pradesh? Yes, I can, because I have a network there. So basically, you need to have a network where all over India. You need to have it. That's the most important thing. If you would be an advocate, I will take another session on this, that okay, now you are a law grad, you are studying law, what strategies you need to be having in your head. So I'm discussing about that. But when you will be a lawyer, I have another five strategies. But in that, I'll tell you one point now only, that bring yourself online. Start having an online presence. How you will do that? WhatsApp पे स्टेटस लगा के, कुछ लीगल न्यूज आया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, सो दैट पीपल विल वॉच. व्हाई, लाइक पीपल, साइकोलॉजी वर्क करता है रे, कि ये अब मान लो कि कोई आदमी कोई दुखी दुखी गाना वाला लगा रहा है गाना, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, यार कुछ बात है क्या इसको, कि ये इतना कुछ ब्रेकअप हुआ है क्या. यू विल हैव दिस इन इन योर हेड, कि ये साइकोलॉजी है. तो यू विल पिंग सम डे आफ्टर 10, 15, 2 months, 3 months, if you are constantly watching it, you will ping them, what happened buddy. Huh? So again, like don't go on that, but let's have a legal, किसी भी लॉ शाला, लॉ सीखो कहीं से भी, या फिर आप लाइव लॉ, इनके कोई भी डेली अपडेट्स आते हैं, एक बार क्लिक करो और अपना स्टेटस पे लगा लो. So what will happen, that 10 to 15 of 100 people will watch it, and they will be like, why is putting constantly legal thing. If they are not aware that you are a law student, still they will be contacting you, the nice message, nice judgment, something like that. Because you are putting your thing in their brain that you are a law student. You are not telling them that I'm a law student, but they will recognize you as a law student, because you are putting and updating them with these things. So I'll tell you, bring professional, build a professional network. And now, how a strong network can be made? By attending seminars, bar association events, legal conferences. These are few things which connects you and gives you a greater network. Do this. As a student, you can also join legal organization like dalsas, ngos, for more exposure. I'll tell you, go to dalsas, go to ngos. Your first internship need to be there. Do internship at ngos. And then ngos में भी क्या, ह्यूमन राइट्स के अंदर में कर रहा है, ऐसे नहीं, नॉर्मल वाला एनजीओ में चले जाना, जो लीगल थिंग्स में डील कर रहे हैं उन पे, उनके साथ ज्वाइन करना. And then maintain a good relationship with professors, yeah, seniors, and mentors who can guide your career. You need to have somebody who can guide you throughout. And yes, Satala publication, in that I will be there, and I constantly support my students. Like, जो लोग हैं उनको पता होगा, तुम कुछ भी सवाल लाओ, I'm there. And yes, you are connected with us from WhatsApp channel. Yes, we do that, we support you. Then comes our third point, is develop legal research and writing skill. This is the most important thing. चलो यार, सब कर लिया सर, नेटवर्क स्ट्रांग हो गया. अब अब मान लो रियल वर्ल्ड में आ गए हो, तुम्हें बस एक छोटा सा ड्राफ्ट करने के लिए दे दिया जाए, एक एफिडेविट. तुमने क्या करना है, तुमने किसी सीनियर का कॉपी करना है, पेस्ट करना है. कॉपी करो, पेस्ट करो. बस थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दो, हो गया. नहीं रे, नहीं, डोंट डू दैट. आप अपना एक रिसर्च स्किल को राइटिंग स्किल की तरफ बदलिए. आपका रिसर्च और राइटिंग स्किल दोनों मैच करना चाहिए यार.
कि आपके पास रिसर्च भी है और उस रिसर्च को आप लिख सकते हो, ये होना चाहिए. Don't put it there like totally plagiarized, totally copied. So I'll tell you how to develop that. Start writing articles, start reading journals, start writing blogs, start reading legal magazines, and also writing for legal magazines. Work on case analysis, contract drafting, and legal opinions to refine skills. Take online courses on legal research, tools like SSC, online, Manupatras, and different others. I'm telling you, this is one of the very important point I'm telling. Okay, once you are done with that, fourth and fifth point is very important. One of the very important thing, that is your speaking skills and communication language. It needs to be very important. Like I have inserted this point. If you will see, model UNs, join debating societies, do involve yourself in these things. Do, that's why I told you in the very first slide only that कोई भी कंपटीशन है यार, एक्सटम्पोर है, पार्टिसिपेट करो, डिबेट है, पार्टिसिपेट करो. वाई? सर वो मेरे फील्ड का है. सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सर मेरे फील्ड का है, नहीं है. आपने वहां रहना है यार. एज ए लॉयर यू नीड टू, यू नीड नॉट बी somebody who is knowing everything about something, but you need to be a person who is knowing something about everything. You need to be a person. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, डिबेटिंग सोसाइटीज ज्वाइन करो यार, मॉडल यूएन्स करो यार. बहुत सारे मॉडल यूएन्स होते हैं, आप पार्टिसिपेट कीजिए, दूसरे कॉलेजेस में जाइए. प्रैक्टिस क्लाइंट काउंसलिंग, नेगोशिएट एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स. एक सब्जी वाले से सब्जी लेने जाओ, उसके साथ 5 रुपए कम करवाओ यार. दैट इज योर नेगोशिएटिंग स्किल्स. सर कहाँ काम आएगा ये? बहुत जगह. आप किसी क्लाइंट के साथ बैठे हो, नेगोशिएटिंग स्किल्स काम आएगा. आप किसी क्लाइंट के अपोजिट काउंसिल के साथ बैठे हो और उसके पनिशमेंट्स पे बात कर रहे हो, आपको आपका नेगोशिएटिंग स्किल्स काम आएगा. आप किसी मीडिएशन में बैठे हो अपोजिट पार्टी, और जो एलुमनी मांग रही है लड़की सामने वाली, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख, आप उसे 10 लाख, 5 लाख पे सेटल करो. ये आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स है. इट इज ऑल लाइक अ सब्जी वाला रे. लाइक सब्जी वाले के साथ आप मांडवाड़ी कर रहे हो कि भाई नहीं, 5 रुपए कम करो ना भैया, भिंडी 30 की नहीं, 25 की चाहिए. दैट इज नेगोशिएटिंग स्किल्स. And then comes learn to simplify complex legal terms to better client interaction. अब मैं बोल रहा हूं ना कि एक रिट पिटिशन सुओ मोटो लेगा हमारा केस में, तो हम लोग देखेंगे प्रमा फसाई केस बनना चाहिए ना सर. अब क्लाइंट खुजा रहा है सर, व्हाट इज दिस प्रमा फसाई सर, और यू आर यूजिंग सम लीगल टर्म, हाई फाई वर्ड्स. नहीं, simplified. And when you will go for drafting skills, when you will start learning drafting skills, this point is one of the most important point, and this two words, simplify complex legal terms. सिंप्लीफाई करो एकदम, जितना सिंपल वर्ड लिखना है उतना सिंपल वर्ड लिखो. एंड देन कम्स लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टिप्स, लास्ट स्ट्रैटेजी फॉर ए लॉ स्टूडेंट, दैट इज स्टे अपडेटेड विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स. जैसे कोई लैंडमार्क जजमेंट्स, कोई अमेंडमेंट, कोई पॉलिसी चेंजेस. आपने ना पढ़ने की आदत डालनी है यार, पढ़ना है बस, आपको अपडेटेड रहना है बस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सब्सक्राइब योरसेल्फ टू सम लीगल न्यूज वेबसाइट्स, जैसे लाइव बार हो गया, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, एसएससी ऑनलाइन हो गया. मैं खुला प्रमोट कर रहा हूं यार. इट इज नॉट दैट दे आर पेइंग मी, आई एम टेलिंग यू, इट इज फॉर योर बेटरमेंट. कि भाई लॉ, लाइव लॉ पे जाओ, बार एंड बेंच को सब्सक्राइब करो, एसएससी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करो, मनु पात्रा को सब्सक्राइब करो. दीज आर फ्यू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड मनु पात्रा इज सस्ता देन एसएससी ऑनलाइन, आई एम टेलिंग यू नाउ. It is not that I'm criticizing them, but they are very expensive. Go for live law, they are sastare. Go for and they have built a very strong network. Then engage in discussions on legal forum, LinkedIn groups, WhatsApp legal communities, and yes, WhatsApp to YouTube channels. मेरे साथ किसी पॉइंट पे डिस्कशन करो, मुझे क्वेश्चन दो यार, गिव मी क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस. एंड बेसिकली ये सवाल एंड जवाब इसी चीज के लिए है, ये डिस्कशंस, ये इसी तरह के डिबेट्स के लिए कि आप मुझे सवाल दो, मैं आपको जवाब दूं यार. अगर आपको कोई भी डाउट है यार, यू कैन आस्क मी हियर एंड आई विल बी आंसरिंग दैट पर्टिकुलर डाउट. And yes, this is the most relieving
slide. Thank you. so so yes, these are the five strategies which according to me is very important. And yes, I have few questions here. Okay, I'm going to. Atul is deleting his messages. Atul, don't do it. Huh? So Sanuj has asked me, sir, how is the interaction phase from JR advocate, junior advocate to senior advocate determined? Okay, very good question. Pratik says hello. Okay, so I'll tell you how it is important, uh, and how I'll tell you a journey of a advocate. I'm very much I'm quite sure कि तुम लोगों को ये जरूरत पड़ेगा इस चीज का कि जर्नी कैसे होता है एक एडवोकेट का। आप जब लॉ स्टूडेंट होते हो ना, आपने दो चीजें करनी है। पहले तो जो मैंने 2-3 स्लाइड्स में बताया कि आपका एक बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क होना चाहिए यार, कि मतलब अगर कोई बैंगलोर में है और उसे एडवोकेट चाहिए झारखंड में, ही नीड्स टू नो कि तुम झारखंड में हो एंड दे कैन कॉल यू इजिली, ताकि वो नेटवर्क तुम्हारा बने। और होता है यार, यहाँ के लोग बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ आई गॉट फ्यू केसेस देयर इन दिस वे। आपको वो नेटवर्क बनाना है कि वो जरूरी। और ये अभी ही 5 साल, ये 5 साल के लिए जॉब है। वो कहते हैं ना 5 इयर्स प्लान, ये 5 इयर्स प्लान है जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये 5 के 5 स्लाइड, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। हाँ, मैं हर जगह डाल दूंगा, जो जो ग्रुप में आप किसी भी ग्रुप से अगर हो तो मैं ये स्लाइड डाल दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आई एम टेलिंग यू कि अभी क्या करना है। अभी आपको ग्रुप बनाना है, अभी आपको बहुत तगड़ा एक नेटवर्क बनाना है। आपको नेटवर्क बनाना है, आपको अपने स्किल्स पे वर्क करनी है। जैसे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कर रहे हो, मॉक ट्रायल कर रहे हो, आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट कर रहे हो, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, आप सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, आप अलग अलग लीगल कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हो, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एनजीओज में, आप डालसाज वगैरह में, आप डीआरटी में, आपको जो भी जगह मिल रहा है वहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू। Now comes second thing. Okay, is my voice audible to you all? Tell me. मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? Like, please write it there ना. Please write in the chat box. मैं audible हूँ ना सबको? Okay, yes, Gaurav Singh, yes. Okay, and also put ना कि कौन कहाँ से है, I want to know, like मैं seriously जानना चाहता हूँ कि कौन कहाँ से है, like दीपक केसरी, गौरव सिंह, सनोज कुमार पॉल, बेबी कुमारी, मधुबनी किंग, या I seriously want to know कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, and are you a part of our WhatsApp channel? So if you are a part of our WhatsApp channel, then seriously I want to know. Okay, so yes, what is the journey? Firstly, answering Sanoj's questions, and yes, we will be coming live. Don't worry, we will be coming live. Mostly, we'll try to cover at least 3 days in a week. और हाँ, धीरे धीरे ना हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ बुक्स को भी कवर करेंगे यार, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, कभी सीआरपीसी को लेकर बैठेंगे, कभी आईपीसी को लेकर के बैठेंगे, बट वी विल बी कवरिंग लॉज ऑल्सो, सो दैट ये जो हमारा लॉज है ना, ये वाला चीज, ये बहुत इंटरेक्टिव हो यार। एंड आई वांट प्लीज पीपल प्लीज लाइक इट आल्सो, हाँ, प्लीज लाइक, बिकॉज 17-18 लोग हैं, आई वांट एवरीबॉडी टू लाइक इट, सो दैट मनोबल बढ़े यार हमारा। हाँ, ओके ओके, मधुबनी किंग इज आशीष सिंह ठाकुर। चलो हाँ, एक सीनियर टू एडवोकेट और जूनियर का मैं बता रहा था। तो आपके पास अगर ये नेटवर्क है ना, तो आप मार्केट में आए, आपके पास केसेस होंगे हाथ में। बट यस, ऑब्वियसली आप लर्न करोगे 1 साल, किसी सीनियर के अंदर में आप सीखोगे। एक बार आप सीख जाओगे ना, तो आप छोटे छोटे केसेस ले पाओगे खुद से। हाँ, कैसे छोटे छोटे केसेस आप ले पाओगे, मैं बता रहा हूं कि आप जैसे कि बेल के मैटर्स, आप कोई ड्राफ्टिंग का मैटर है, आप अपने अभी ही अगर ड्राफ्ट अच्छा कर लिया, तो आपको बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स तो अभी ही ठीक करना है, जितनी जल्दी कर पाओ आप अपना वो चीज ठीक करो, समझ गए? ड्राफ्टिंग स्किल्स को, ताकि बाहर मार्केट में जब जाओ ना, तो ऐसे नहीं कि सर सिखा दो ना सर, ये नहीं करना पड़े। वरना सीखने में तुम्हारे 2 साल चले जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, 2 साल सीखने में चले गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में 2 साल चला गया, 4 साल तुम्हारा खत्म हो गया। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस यहीं पे बिल्ड कर लीजिए आप, यहीं पे, ठीक है? सो वंस यू स्टार्ट, इट टेक्स अराउंड, देयर इज ए प्रॉपर क्राइटेरिया, देयर इज ए प्रॉपर क्राइटेरिया कि आप कैसे इंटर्नशिप्स, आपका जज सीनियर एडवोकेट कैसे बनते हैं आप। जैसे कि आपके नाम पे मोर देन 100 केसेस होने चाहिए रजिस्टर्ड,
फिर दूसरा मतलब वकालतनामा में आपका साइन होना चाहिए। आप उस कोर्ट में अपीयर हुए हों, हाँ, बहुत सारे कोर्ट्स में अपीयर हुए हों। आपके नाम पे अराउंड 50 से 60 लैंडमार्क जजमेंट्स होने चाहिए। और ये लैंडमार्क जजमेंट्स कौन डिटरमाइन करता है? ये आपके जजेस डिटरमाइन करते हैं कि हाँ, ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट था। और हर साल जो वहाँ का सीजीआई होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कोर्ट और मुंबई कोर्ट और एनी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो आपके लॉ आपके जजमेंट्स को रिफाइन करते हैं यार, देखते हैं साल में कि कौन सा जजमेंट सबसे अच्छा था। और उसके बाद वो फिल्टर होता है, नाम फिल्टर होते जाता है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम with passage of time and your work, you become a senior advocate. These are few of the things. It is all about working hard. You need to work hard. That's the first thing. Okay, I hope Sanoj got his answer. Now, the second question which Baby Kumar is asking is, what is the difference between the letter of the law and the spirit of the law? Yes, very good question. What is the difference? You need to know what is letter of law first of all, and then you will be understanding spirit of law. Most important thing. So basically, if I go on to answer that, what is, first of all, you need to understand that it is word for word reading. It is very precise, and you need to read word for word reading of the law. That is letter of law. I hope if you are getting it. It is word for word reading of the law. That is letter of law. Spirit of law, it is the intentions. That what is the intention of the law? Well, it is all under, if you will go, if you'll ask me, sir, where to find this thing, interpretation of statutes. Interpretation of statutes are very much clear on letter of words, letter of the law, and spirit of the law. On these two things, letter of the law and spirit of the law. Spirit talks about the intentions, letter of the law talks about reading of the law, like how to read, what interpretation I have to use. Is it golden rule or which kind of rule? So that is letter of law and spirit of law. Very good question, baby, and I seriously want you all also to put me questions like that. ऐसे क्वेश्चंस पूछिए यार आप लोग. हाँ, प्रतीक झा, आई होप इफ यू आर satisfied, and baby and Sanoj, please put yes sir, okay sir, something like that. हाँ, so that I will be like clear कि हाँ तुम्हें आंसर पता चला. और हाँ, बाकी लोग जिन लोगों को नहीं पता है लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ, प्लीज रीड अबाउट इट. और ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है. स्पिरिट ऑफ द लॉ मतलब वो इंटेंशंस की बात कर रहे हैं यार, कि आपके लॉ का इंटेंशन क्या था. जैसे बीएनएस क्यों आया? आईपीसी वर्क कर रहा था ना यार. इट वाज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक मोर देन 70 इयर्स. आज क्या जरूरत पड़ गया कि हमें बीएनएस बनाना पड़ गया, ये बीएनएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया. जैसे पॉस्को क्यों आया? वो स्पिरिट ऑफ द लॉ है. और स्पिरिट ऑफ द लॉ के अंदर में आपको वो इंटेंशंस हो गए मेकर्स के, लॉ के, कि भाई इसको पनिश करना है. दूसरा, आपके उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में घुसना होगा, आपको पढ़ना होगा. देन यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑफ लॉ, कि भाई वो वर्ड क्या रहा है, वो पर्टिकुलर सेक्शन व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चलो, नेक्स्ट इज प्रतीक झा. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बीइंग एन एडवोकेट, precious for the society, relating to honesty ethics? Pratik, you have a very good question, and I don't know how to answer this particular question. Like, you are talking about something कि essential elements क्या हैं sir to be an advocate. इतना तक तो मैं clear हूँ. But you are talking about society and building of the society. I'm telling you now, please read the history of India. Not only India, I'll tell you, read the history of any country, and you will find the role of advocates. I have discussed this in classes also, कि एक एडवोकेट का रोल बहुत है सोसाइटी बिल्ड करने में. आप जरा देखो ना यार, कि वी रीड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. क्या होता? गोलकनाथ में तो जजमेंट आ गया था ना, शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए थे कि नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट, और पार्लियामेंट कर सकता है अमेंडमेंट. दे वर वेरी मच क्लियर, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया यार. सुप्रीम कोर्ट ने, एक कोई सन की लॉयर था ना, आई एम टेलिंग दिस नाउ ऑन लाइव, ये रिकॉर्डेड है, ये अभी मैं स्ट्रीम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, सदा लॉ पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, कि वो एक सन की लॉयर था ना यार, जिसने बोला कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये कैसे कर दिया इसने. हाँ, और पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स कैसे दे रहे हो आप?
व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कहाँ जाएगा ये, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ होगा? अगर मैं सारा पावर शिफ्ट कर दूं पार्लियामेंट के पास, तो मेरे पास क्या रहेगा, मैं किस चीज को बचाऊंगा फिर? एंड वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस एक लॉयर ने गोलकनाथ में पूरे सिस्टम को हिला दिया। और फिर तुम्हारा केशवानंदा भारती के, एंड केशवानंदा भारती के में नानी पालकीवाला साहब ने एक अंडरलाइन कर दिया कि भाई कुछ चीजों को आप नहीं कर सकते हो चेंज। आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, यस बदलो, वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, अमेंडमेंट्स जरूरी है यार। आर्टिकल 368 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 13 के इसमें नहीं कि उसको हम ताके पे रख देंगे। इसीलिए एक वॉर हुआ था आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में, जिसमें आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट की पावर है और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की पावर है। तो आर्टिकल 13 को स्ट्रेंथन करते हुए आप देखना, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13, इफ यू हैव द बुक देन प्लीज रीड आर्टिकल 13, उसके लास्ट क्लॉज को पढ़िए। इट्स सेड कि आर्टिकल 368 में जो भी चेंजेस हो रहा है वो आर्टिकल 13 पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसका। आप आर्टिकल 368 को भी पढ़ो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई पार्लियामेंट अपनी इंटेंशंस कैसे क्लियर कर रही थी, वो कितना ऊपर जा रही थी कि भाई मैं यहां चेंज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में कोई असर ही नहीं होगा, और आर्टिकल 13 तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसमें घुसेगा ही नहीं। तो सीधा सा बात है, क्लियर हो गया यहाँ पे मैटर। लेकिन उस चीज को केशवानंदा भारती में क्लियर किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये, देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। दैट्स द थिंग, एंड दैट्स हाउ, एंड दैट इज द रोल ऑफ एन एडवोकेट। और केशवानंदा भारती is a very big thing. There are n number of movies on. I just saw a movie on Z5. एक बंदा काफी है, watch that movie and see the role of an advocate, and that's how it is, that is the role of an advocate. Okay, I hope Pratik, I made it clear, and if I made it clear, then please put something in the chat box. So we have fancy designer. Hey, fancy designer, please put your name na. It is not a good like you must be a fan designer or something, but please put your name na, so that I may understand कि आप कौन हो. Your question is, sir, how can I get internship under Sada publication? It's very simple. It's very simple. You go, you put your Khushi Verma. Acha. You put your CV, make a CV, and share us on www.sadalawpublication@gmail.com. You share it there. Our team will look into it, and if you are selected, they will be sharing you a message that you are selected, and they will be giving you an internship coordinator. That's all. It's very simple. Then comes Atul. Sir, is it better to create a network in another city or in the bird city? Because I am studying in JSR. Sir, आपके एक्सपीरियंस से क्या सही है? मेरे एक्सपीरियंस से, you need to build a network. For a law student, I'll say all over India में बनाओ आप नेटवर्क, क्योंकि केसेस आपको कहाँ से आएंगे आपको पता नहीं है। हाँ, आप अपना नेटवर्क पूरी 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 ऑल ओवर इंडिया में बनाओ। अब सर कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया ना, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, आपको हो जाएगा। वो बहुत बहुत बड़ा लेंदी पॉइंट है। आप कौन सी ईयर में, एक बार मैसेज कर देना। आई थिंक थर्ड ईयर में हो ना अतुल, तो थर्ड ईयर में हो तो अभी 2 साल है ना आपके पास, तो आप बिल्ड करो नेटवर्क इन एन एरिया। अब मैं जब नेटवर्क बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप क्लाइंट्स लोकल लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ। आपको लॉ फील्ड में नेटवर्क्स बनाना है कि देखना, बहुत सारे लॉ के व्हाट्सएप चैनल्स हैं जो लोग बना रहे नेटवर्क धीरे धीरे। और तुम देखना, जैसे सदालो पब्लिकेशन का एक चैनल है ना, उसमें तुम ज्वाइन हो। वी पुट अपडेट्स देयर, वी सेंड अपडेट्स देयर। वो एक चैनल है तुम्हारा, एक नेटवर्क है। अब तुम्हें कभी जरूरत पड़े, आस्क मी सर कैन यू आंसर दिस थिंग, तो आई विल डायरेक्टली, इफ आई एम नॉट देयर ना, आई विल पुट इट देयर कि भाई अतुल को एक एडवोकेट चाहिए बैंगलोर में, तो आई विल पुट इट देयर सो दैट यू विल गेट इट कि सर यहाँ पे है। तो ऐसे करके ये नेटवर्क है आपका। अब जो बात आप कह रहे हो ना कि आप यू आर आस्किंग कि सर बर्थ सिटी में, जैसे आपका बर्थ सिटी आई थिंक पटना है, तो अगर आप पटना में जाकर के नेटवर्क बनाते हो और फिर यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हो, जेएसआर में आप प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नेटवर्क दोनों जगह बनाओ। आपका स्किल होना चाहिए नेटवर्क बनाने का कि भाई मैं यहाँ बैठूंगा ना तो 10 लोग मेरे साथ बैठेंगे। ये होता है नेटवर्किंग स्किल। आपको वो स्किल होना चाहिए, आपके पास वो बोली होनी चाहिए, भाई 10 लोग मेरे साथ बैठ गए। दैट्स द थिंग यू नीड टू डू। एंड यस, दोनों जगह नेटवर्क बनाओ यार। आई टेल यू, आई विल प्रेफर कि दोनों जगह बनाइए। जैसे मैं झारखंड में कर रहा था, आई एम फ्रॉम बिहार, तो आई थिंक प्रशांत सर इज देयर, या ही वाज माय सीनियर, ही वाज जस्ट इमीडिएट सीनियर टू मी, एंड ही इज देयर। आई थिंक ही हैज आस्क्ड मी समथिंग,
Okay, can you share an example of complex legal case and you successfully navigated, and how your experience and strategy led to positive outcome of the client? Thank you, Prashant Bhaiya, and I am very glad to answer this because Prashant Bhaiya is was one of the. I'll share you this story. Okay, so there are two, three cases which I dealt, and I am very happy to share about these. And I'm pretty sure that Prashant Bhaiya knows about it. So there was a case in Jamshedpur wherein the court ordered for the demolition of the building. Okay, I was practicing under Ayush Aditya, uh, Nandu Babu and Sons, and what happened there that we got this case, and this is the case directly who Prashant Bhaiya was dealing in JSR, and he is practicing I think in Chaibasa. So what happened that he texted sir that we have this case, what to do. So sir said कि हमारे पास सेकंड अपील है, तो हम लोग जाकर के इस पे सेकंड अपील का ये लगाते हैं, पिटिशन लगाते हैं, रिट लगाते हैं एक। तो रिट में हम लोग इस पे ऑर्डर ले लेंगे, स्टे ले लेंगे। आई रिमेम्बर सर ने रात में रोक के रखा था मुझे अराउंड 12 बजे तक, एंड वी लुक्ड इनटू इट। इवन माय सर आयुष सर was very hard, like dedicated person. He read the entire thing and he got his point. He said कि जाओ अनमोल आप बस सुबह मिलते हैं। We drafted the case on the very same day and then we filed it. Next day हमारा वो केस था कोर्ट में। I'm telling you that writ was rejected. The court said that please withdraw this writ because it is not maintainable, because you already have a second appeal in the in another court in this particular matter only. So better go there and then you will get your proper remedies there. The demolition was supposed to happen the very next day. We were supposed to do something. So what we had to do, we call I only called Prashant Bhaiya that this is the order we got, but we are doing something on it. So we filed another case, another petition, that was SLP, like we introduced another petition and we said in that second appeal only, and we asked it for urgent hearing. Court took it on the very same next day, and we got the order in the morning itself. Then I think our Munsi Bhaiya called Prashant Bhaiya that this is the order we got, and I'm waiting here. And the order has went for typing, like the backside they are typing it. Once they get it, we will fax you there. So better you be there. So I think Prashant Bhaiya was there, and this was the one of the very good case which I dealt. Just make it demolition se ruka tha. If Prashant Bhaiya you are there, then please put yes or no, something like that. Huh? Okay, so this was one of the case which we dealt, and I'm really happy to share this here. Next question we have is Mahi Sinha. Okay, the question is, sir, but sir, in Keshwananda Bharati, the judgment stated that any amendment made under Article 368 cannot be challenged under Article 13, even it's violative. When you read the law, basically, especially when you are reading the judgment, you need to understand the context, what the judges are telling. It is talking about, again, I'm starting from there only, Article 13 and 368. True, it will not happen. There will be no repercussion, even though it violates. In Keshwananda Bharati, the most important thing which was done there was establishing of a doctrine called doctrine of basic structure. So this is the most important thing, that the basic structure doctrine was introduced there. Understood what I'm saying? कि जब बेसिक जो चीजें है ना, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश जब कर दिया गया, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के वर्ड को हमने 1973 के बाद से इवॉल्व किया है पूरे 2005-6 तक, और आज भी उसमें प्रोग्रेशन होता है। आज भी हम लोग उसको प्रोग्रेस करते हैं। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने 2018 में, आर्टिकल 21 के अंदर में हमने पूरे प्रियम्बल को बोला कि भाई ये पूरा का पूरा प्रियम्बल ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो वर्ड था उस पे हार्डकोर फोकस्ड किया गया था। साथ ही साथ यार कि सुप्रीम कोर्ट देखो, गोलकनाथ और दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट व्हिच आई एम पुटिंग हियर, कि गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कोई अमेंडमेंट करोगे तो वो वॉलेटिव नहीं होना चाहिए, आप पूरे के पूरे संविधान को छूने लायक ही नहीं हो, आप नहीं छुओगे।
लेकिन बाद में उस चीज को किया गया था कि चेंज किया गया था। ठीक है। ओके। सो आई थिंक प्लीज रीड इट अगेन केशवानंद भारती को एक बार फिर से पढ़िए, तो आपको पूरा क्लैरिटी आएगा उस पर। ठीक है। ओके, हाउ इज इट फेयर? ओके, we'll deal that. Next question is, sir, is it good to explore uncommon legal fields like sports law, data privacy? Yes, obviously. Yes, obviously रे। देखो, आज का टाइम ना बहुत ज्यादा वो हो गया है, कट एंड थ्रोट वाला कंपटीशन है। बहुत ज्यादा कट एंड थ्रोट है आज के टाइम में। लोग क्या कर रहे हैं कि, और बहुत सारे फील्ड्स इवॉल्व हुए हैं, अगर तुम देखोगे। आई जस्ट गॉट एन अपडेट। हाँ, वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू पीपल, कि एक लॉ कॉलेज है जो एआई में आपका एलएलएम करवा रहा है। वेट, जस्ट वेट। यस, दिस इज द मैसेज। So Jindal Global University launched degree in artificial intelligence and law. Just remember कि भाई, see this, कि भाई जिंदल ग्लोबल लॉ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉ दोनों के ऊपर आपका इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि भाई ये कोर्स है। हाँ, सो बेसिकली आपकी बातें जो है कि भाई सर कैसे हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप सिर्फ बुक पे स्टिक नहीं रह सकते हो। आप सिर्फ वो सारे लोग पढ़ रहे हैं यार लॉ। टेल मी, इफ आई एम अ रिक्रूटर, हाँ, and you are there and a person, if you are there with these skills where you have explored another laws, and there is another guy, he is there who has studied the same thing which has been in the course, tell me मैं किसको हायर करूंगा if I'm on that person's position? Obviously जिसके पास अलग अलग स्किल्स हैं, जिसने थ्रू आउट कुछ ना कुछ किया है, आपका वर्क दिखना चाहिए। मान लो ऐसे अनदर लैंग्वेज में अगर इस चीज को समझाएं, तो ये ऐसे जाएगा कि मान लो सीवी आया है और दो लोग हैं, दोनों दोस्त हैं। हाँ, दोनों का सीवी आए, सेम मार्क्स, सब कुछ सेम। अगर मैं पूछूं एक तुम्हारा है और एक तुम्हारे किसी दोस्त का है, ओके सनोज, अब मैं देख रहा हूँ सीवी, मैंने देखा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाई शुड आई हायर यू नॉट हिम? ऑब्वियस ही बात है ना, तुम्हारा जो दोस्त है वो बोलेगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। अगर उससे बोला जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ही विल बी लाइक सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट अबाउट लॉ, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन दिस। तुमसे पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे सर आई एम वेरी मच पैशनेटेड अबाउट लॉ, and I have done throughout my law degree, I have explored myself in these things, and I have tried myself to achieve these things. तो तुम्हारा जो वो होगा ना, उस चीज को क्या कहते हैं कि स्टिग्मा, कि भाई कितना हुआ, वो तुम्हारा बेटर होगा मेरे। क्योंकि तुम अगर बोलोगे ना कि आई एम ए हार्ड वर्किंग, तुम्हारा हार्डवर्क दिख रहा है तुम्हारे सीवी पे यार, कि तुमने बहुत सारे काम किए हैं, तो ऑब्वियसली तुम पहले प्रेफरेंस होगे। तो एक तो ये है, दूसरा नॉलेज, कि आपको स्पोर्ट्स लॉ का कल के दिन मान लो कोई यही जेआरडी में किसी फुटबॉलर के साथ कुछ हो जाए, या किसी बॉक्सर के साथ कुछ है, और वो तुम्हारा केस तुम्हारे पास, उसका केस तुम्हारे पास आए, क्या बोलोगे? अरे यार स्पोर्ट्स का तो नॉलेज ही नहीं है मेरे पास, क्या करे? ये नहीं बोलोगे ना यार, यू विल गो फॉर इट। हाँ, यू विल से आई नो, तो डू इट। आई एम टेलिंग यू, एक्सप्लोर एवरीथिंग, वॉट एवर, एवरी एरा, एवरीथिंग। और इससे ना एक और चीज होता है यार, व्हेन यू गो ऑन टू रीड दीज अनदर अनदर थिंग, जैसे मैं शेयर मार्केट में भी बहुत दिमाग लगाता हूँ, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स नो इट। अब एक बात बताओ, सिर्फ मार्केट में बैठता हूँ मैं, कि मुझे मार्केट का आइडिया भी होता है कि भाई कल इलेक्शन हुआ ना, दिल्ली में बीजेपी जीती ना, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा मार्केट में? आपको मैं बता रहा हूं, आप कल बैठना मार्केट में, आप निफ्टी 50 इंडेक्स करके होता है, इंडेक्स होता है, आप निफ्टी 50 को देखना कल वो कितना ऊपर जाएगा। क्यों? वो पॉजिटिव न्यूज है ना। अब यही क्या होता है कि सैटरडे, मान लो ये थर्सडे को रिजल्ट आता और फ्राइडे को मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाता, अब बीच में क्या हो गया, संडे, अब मंडे, मंडे को क्या, ऊपर करेक्शन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज है कि सर आरबीआई का गाइडलाइन भी तो आया आरबीआई का लाइन आया था थर्सडे को, तो सर उन्होंने रेट कट किया है, तो उस पे क्या होगा सर, बैंक निफ्टी पे कुछ असर करेगा क्या? एकदम करेगा। बैंक रेट कट कर दिया उन्होंने, तो भाई बैंक रेट अगर कट हो जाएगा तो बैंक के पास पैसे कम आएंगे। समझो उस चीज को, फिर बैंक, ऑब्वियस सी बात है, बैंक या तो वहीं पे स्ट्रेट न्यूट्रल कैंडल बनाए, या फिर नीचे जाए, भाई वो नीचे ही जाएगा। हाँ, लेकिन दो तीन चीजें पॉजिटिव है कि भाई एसबीआई का अच्छा न्यूज आया, मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ यार,
कि भाई मैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ उन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें इससे असर पड़ेगा। मतलब कहने की बात इतनी है कि आपके पास बस नॉलेज होना चाहिए कि आप उस चीज़ में घुसो। समझ गए? इफ सनोज इज़ कन्फर्म्ड सैटिस्फाइड विद द आंसर प्लीज़ येस और नो कर दो यार। हाँ, आई थिंक ये कर दिया उसने। थैंक्स सर। ओके, प्रशांत भैया अगेन। व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? व्हाट चेंजेस डू यू विश टू मेक टू द लीगल सिस्टम? Prashant Bhaiya, you are screwing me now. Let's imagine he has given me a hypothetical scenario where I am the Chief Justice. First of all, I will not talk to you people. Ah, Sorry, I was just kidding. Huh. If I am the Chief Justice of India, there are few things which I sincerely want to be changed in the system. The first thing which I want is to न्यू लॉयर्स के लिए कुछ करता है यार। ये जो न्यू लॉयर्स हैं, जो जैसे मेरे ऐसे लोग यार, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ ओनली कि मैंने लॉ छोड़ दिया, मैं टीचिंग में आ गया। कुछ तो रीज़न्स होगा ना। हाँ? एंड द बिगेस्ट रीज़न जो होता है, वो होता है भाई एक्सपोज़र का। हाँ, आई शुड नॉट डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट मैं जो भी करता, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए कुछ करता। मैं बोलता भाई सीनियर्स को कि भाई पैसे दो ज़्यादा इनके, ठीक है? फिर सेकंड पे अगर बोलें कि और क्या करता? मैं एक चीज़ों पे बात हो रही है, बहुत साल से हो रही है कोर्ट में कि कॉम्प्लेक्स जो चीज़ टर्म्स है ना, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब लोगों के तक। जैसे मैं जमशेदपुर में पढ़ा रहा हूँ, देयर आर स्टूडेंट्स हू हैव प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज and they face a lot. Sir, I get a problem. I get this message from a lot of students कि they have issues with their language. कुछ लोग बहुत अच्छे हैं हिंदी में यार, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में यार, कुछ लोगों का दोनों में हाथ ढीला है, दोनों में एक्सीडेंट हो गया है, दोनों लैंग्वेज में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं कुछ करता। जैसे कि आई वाज वाचिंग, आई थिंक इट वाज फ्रॉम एमपी, एमपी हाई कोर्ट का एक मैं ऑनलाइन स्ट्रीम देख रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लाइक अगेन मैटर ऑफ करेक्शन, बट व्हाट वाज देयर आई एम टॉकिंग अबाउट इट कि एक लॉयर साहब थे, वो हिंदी में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और जज साहब कह रहे थे, अरे इंग्लिश में करो, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। अरे ऐसे, ये थोड़ा गड़बड़ मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कंफर्टेबल होना चाहिए यार। और दूसरा लॉयर्स के लिए तो होना ही चाहिए, उतना ही ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए भी होना चाहिए कि उनको भी समझ में आए। और तीसरा, मैं जो तीसरा इसी चीज़ पे है कि भाई मैं लॉयर्स के लिए कुछ करता, थोड़ा स्ट्रिक्ट करता उस चीज़ में कि भाई आप ना उनको बताओ यार कि उनको सुनने के लिए, मतलब क्लाइंट्स को सुनने के लिए मैं घुसाता कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनको भी घुसने के लिए परमिशन कुछ तो करता, मतलब थोड़ा-सा लिबरल होता कि भाई एटलीस्ट एक आदमी घुसे और सुने मैटर को। पूरा थॉरो चेक कर लो, उनका वेरिफिकेशन कर लो, एडवोकेट वेरिफिकेशन जैसे भी कर सकते थे। उनको वेरीफाई करके उनको क्लाइंट को घुसाते कि भाई देखो तुम्हारा वकील ना तुम्हारे बिहाफ़ पे बहस कर रहा है। उससे क्या होता है ना कि भाई फीस जो दे रहे हैं वो उनको भी लगता है कि नहीं दे रहे हैं। अब होता क्या है कि भाई बहुत सारे लॉयर्स टाइम ले रहे हैं। हाँ। वो क्यों ले रहे हैं? फीस नहीं आई है। तो भाई क्लाइंट्स को पता चलेगा ना कि भाई हाउ मच हार्ड वर्क दे आर पुटिंग, योर लॉयर इज़ पुटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आई बिलीव कि ये भी थोड़ा-सा फ़ायदेमंद होता। तो एज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस। हाँ। प्रशांत भैया, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बट डोंट पुट मी इन these kind of scenarios. And yes, what changes do you wish to make to the legal system? Yes, these are one of the most important changes which I would have done. Okay. So I hope Prashant bhaiya, I made you satisfied. Next comes is, सर फीस हाई होगा बहुत, जिंदल है ना? Please, I'm not putting these comments. I have already made a lot of controversial statements. I'm not putting any controversial statements now. Next is fancy designer. Sir, how can we combine management with law? Are you a student of BBA LLB? Huh? Please put it there. Na? Are you a student of BBA LLB? हाउ कैन यू मेक दैट क्लियर, लाइक मैनेजमेंट और लॉ को कैसे मिलाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि भाई मैनेजमेंट, पहले तो ये समझो कि तुमको बीबीए एलएलबी कराया क्यों जा रहा है, बीबीए करवाया क्यों जा रहा है, डायरेक्टली लॉ क्यों नहीं करवा रहे? हाँ, लॉ इज ए प्रोफेशनल कोर्स, इट इज नॉट समथिंग कि भाई कोई इमेच्योर आदमी उसको समझ ले। तो तुम्हारा जो वो 5 साल का, अगर तुम बीबीए एलएलबी कर रहे हो, तो वो 5 साल का टाइम ना तुम्हें मेच्योरिटी लॉ को समझने के लिए है कि भाई आप समझो। मैनेजमेंट इज बेसिकली टू मेक इट अंडरस्टैंड कि आप सब कुछ को बारीकी से समझ रहे हो। जैसे कि मैनेजमेंट के कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लोग यू विल इग्नोर दिस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर दिस। हाँ,
फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू आर इग्नोरिंग दिस, आई एम टेलिंग यू, लोग कैसे इग्नोर करते हैं इस चीज को, कि उन्होंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़े, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड दी स्टफ्स, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। और उसके बाद फिर जब वो लॉ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो कंपनी लॉ को भूल जाते हैं, वो बैंकिंग लॉस को भूल जाते हैं। भाई क्यों भूल जाते हैं ये? क्योंकि तुमने अपने 2 साल एटलीस्ट 2-3 सेमेस्टर तो तुमने ध्यान दिया ना यार उन सब्जेक्ट्स पे, पास होने के लिए तो पढ़ा कम से कम। अब जब बारी आई उस चीज को अप्लाई करने की तो तुमने, अब उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? किसी कंपनी में होगा ना। यू आर ए लॉयर, यू आर नॉट समबडी हु विल बी एन अकाउंटेंट इन सम अदर कंपनी। तुम अकाउंटेंट नहीं बनने वाले हो, तुम लॉयर बनने वाले हो। तो तुम वहाँ कंपनी लॉ, अब एज़ ए लॉ स्टूडेंट तुम ज़रा समझो कि तुम उनके बैलेंस शीट को भी समझा पा रहे हो कि अच्छा हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, पी-एन-एल ये है, ये लेजर है, ये सारी चीज़ों को तुम समझ रहे हो। तो इसी चीज़ का तो कॉम्बिनेशन है ना ये। मैनेजमेंट को समझे, तुम लॉ को लगाए। लॉ को तुम इग्नोर मत करो यार, कंपनी लॉ को समझो अच्छे से, तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझो, तुम मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझो। और जब लॉस पढ़ो, उस कंपनी या किसी भी पार्टनरशिप डीड या कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसको मिलाइए यार, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, चलो, आई होप आई आंसर्ड फैंसी डिजाइनर्स आंसर। सो सनोज वाज लाइक थैंक्स सर। अतुल कुमार वर्मा, सर शेयर मार्केट पे सेशन लीजिए। जरूर लेंगे यार, जरूर लेंगे। मैं वर्किंग ऑन इट। सनोज सर स्टॉक मार्केट पे सेशन लेंगे यार, तुम लोगों को शेयर मार्केट जरूर सिखाएंगे, सर बोल रहे हो ना यार। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रशांत कुमार, थैंक यू सर, मे बी इन फ्यूचर। Yes, obviously, sir. Maybe it will totally, we will totally work on it. Next is fancy. Yes. So, no, every weekend such live session is required, sir. Fun and enlightenment at the same time. Okay. No, 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 no. Don't say it every week. I am planning this in a week for 3 times. हाँ, अभी का ना सेशन ये तो ऐसे ही था, ये टेस्टिंग मोड में था। आई एम ब्रिंगिंग, आई एम डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई हमारे पहले तो यूट्यूब चैनल भी मेरा ग्रो हो, पहला चीज। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, सदा लॉ का एक नेटवर्क मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ यार, जो कि हो नहीं पा रहा है सिर्फ इधर उधर से। तो मैं यूट्यूब को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाह रहा हूँ, और आई कैन सी दैट 23-24 पीपल वेर देयर फॉर द इंटायर सेशन। Although I failed, I drastically failed in providing the link properly. I have failed. हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई वो चीज प्रॉपर हो जाए। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग 2-3 दिन में जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया करके आएंगे यार। अभी मैंने बताया है सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को लेकर के ना, मैं लॉयर्स के लिए भी एक डिजाइन किया है मैंने, जो सेम पीपीटी, उसी टाइप का पीपीटी। तो मैं उनके लिए भी एक सेशन लाऊंगा यार। दूसरा, चलो सर, कैन यू शेयर द प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल ऑनलाइन? First, write an article, share it with me, or share it with somebody who has already published it. तो ऐसे पब्लिश हो जाएगा यार। यू आर आस्किंग मी टू गेट डीपर इनटू इट, डोंट आस्क मी हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ऐसे ही पब्लिकेशन होगा। नेटवर्क, इसी के लिए नेटवर्क जरूरी है, समझ गए? नेक्स्ट इज सनोज, दैट वुड बी इवन मोर फन सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, आई बिलीव दैट दिस इंथुजियाज्म ऑफ योर्स मेरे को प्रोत्साहित करे यार। हाँ, राजू दिवाकर, sir, can you please explain something about AOR, advocate on record? Is it AOR is you are talking about advocate on record? Because AOR से और भी चीजें होती हैं यार। हाँ, तो मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में बता दे रहा हूँ कि भाई इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट में हर साल 2 साल पे एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है। आप उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम दीजिए, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाइएगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में साइनिंग अथॉरिटी हो जाइएगा, और उसके बाद फिर आपके नाम, आपके केसेस के नाम से भी एक एओआर चाहिए यार सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। आप मान लो मैं अगर हाई कोर्ट से हूँ या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं एओआर नहीं हूँ, मैं एओआर के अंदर रहूंगा तभी जाकर के केसेस मेरे फाइल होंगे। आप इसी के लिए मैं बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट जाकर के प्रैक्टिस करो। आई थिंक राजू इज इन फर्स्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट इट। नेक्स्ट इज अतुल कुमार वर्मा, सर व्हाट आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर? क्योंकि पटना लोअर कोर्ट फर्स्ट जनरेशन वालों के लिए डिप्रेशन का जगह बन गया जाता है। यू आर रॉन्ग अबाउट पटना हाई कोर्ट, आई एम टेलिंग यू। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पटना हाई कोर्ट में ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हर एक कोर्ट में ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लॉयर्स का।
फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए समझ लो तुम्हारे सामने एक गड्ढा है और तुम्हें उस गड्ढे को पार करके दूसरे स्लैब पे जाना है, तो तुमको मेहनत करना होगा यार। सेकंड जनरेशन के लिए इजी क्या है कि एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज क्रॉस कर लेंगे वो पैदल आराम से। लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिट ये है ना कि तुम्हारे लिए गड्ढा है, तो तुम्हें कूदना है यार, छलांग लगाने हैं। तो मतलब छलांग ऐसे नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना होगा उस छलांग के लिए, राइट? हाँ, 100 मीटर, 200 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए मेहनत करते हैं ना, तो तुम्हें लॉन्ग जंप करना है यार। तो लॉन्ग जंप के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। हाँ, सीधी सी बात है। जब मैंने अभी बोला ना नेटवर्क बनाइए, नॉलेज रहना चाहिए, आप जाकर के देखना फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को वहाँ पे नॉलेज है क्या? ऐसा थोड़ी है मैं पटना हाई कोर्ट को नहीं जान रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ यार, देयर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन हू आर देयर। हाँ, एंड आई एम नॉट टेलिंग दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे आर नॉलेजेबल एंड दे हैव केसेस। आई हैव माई फ्रेंड्स पटना हाई कोर्ट में जिन्होंने 1 साल में ना केसेस उठाए हैं, और अच्छे खासे केसेस उठाए हैं। सो डोंट टेल मी दिस कि वो प्लेस प्रॉब्लम का है। भाई लोग मेहनत नहीं करते हैं शुरुआत में, ये अभी 5 साल ना मज़े ले लोगे तुम। मेहनत करो ना यार, मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अभी जो मैंने वो 5 पॉइंट्स बोले ना, वो 5 पॉइंट्स पे वर्क करो। बिल्ड योर नेटवर्क, गेट नॉलेज, दीज़ थिंग्स विल हेल्प यू आउट। समझ गए? आई होप अतुल आई सैटिस्फाइड you. Santjeet, sir, today's class I have got lot of knowledge from you about law. Okay, thank you, thank you. आप कहाँ से हैं, एक बार वो मैसेज कर दीजिएगा यार। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ पब्लिक प्रोसेस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पहले तो जानो यार, प्रोसिक्यूटर वर्ड यूज किया जाता है क्रिमिनल लॉ में। पीपी जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीपी आप स्टार्टिंग में नहीं बनिएगा। आपके पास एक गवर्नमेंट का, ये एक गवर्नमेंट पोस्ट होता है जिसमें आप स्टेट ऑफ झारखंड को या स्टेट ऑफ बिहार को, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को या स्टेट ऑफ उड़ीसा को, जिस भी स्टेट से आप हैं, आप उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर क्रिमिनल मैटर में। ठीक है? आप जब उस पर्टिकुलर मैटर में क्रिमिनल कोर्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सीनियर लॉयर रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके नीचे और भी होते हैं जैसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। अब बनते कैसे हैं? तो एपीओ का एक जॉब एग्जाम होता है, एपीओ का आप एग्जाम दीजिए। आप फर्स्ट ईयर के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं एपीओ के एग्जाम के लिए, जिसमें 3 मेजर क्वेश्चंस, मेजर सब्जेक्ट्स पे डील किया जाता है, आईपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। आप इन तीनों लॉ को अमेंड कर दिया गया है, नए नए लॉज लाए गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएनएसए। तो आप इन तीनों लॉज को एकदम खा जाइए, पढ़ के चाट जाइए, घोट लीजिए। इससे क्या होगा कि भाई आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। साथ में जनरल नॉलेज भी देखिएगा, जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस स्टेट का देख रहे हैं, उस स्टेट का तो जनरल आपको देखना ही है। हाँ, तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, यू विल बी गेटिंग द आंसर्स। हाँ, और उसके बाद आप एपीओ का एग्जाम दीजिए, बन जाएगी। 60-70 रुपए के 1000 की जॉब है, और अच्छा खासा आपका वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद आप पोस्ट भी बढ़ता है यार। हाँ, next is Mahi sir, can you have a session on all the important exams which we can proceed with after our graduation on final year? Yes, 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 yes. देखो अब यही करेंगे हम। मैंने सोच लिया है कि ये इस साल 2025 में दिस इज माय, क्या कहते हैं उसको, ओथ, कि मुझे यही सब करना है। टीचिंग तो ऐसे भी छोड़ रहा हूँ मैं, तो ये यही सब करूंगा ना मैं यूट्यूब पे। हाँ, नेक्स्ट इज अतुल सर, जमशेदपुर कोर्ट में इंटर्नशिप करवा दी। Yes, पक्का पक्का। I have some connections ना, I have some students who will get you an internship. Satyajit, West Bengal, Purulia, and your senior LLB first year student. अच्छा, very good, very good, very good. चलिए, welcome everybody. With that note, we will end this session क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई। 10:34 हो गया है। हम लोग 2-3 दिन में प्लान कर रहे हैं एक और यूट्यूब सेशन का, तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं आप सभी से। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। कैन यू रिमेंबर मी? यस, 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 ऑब्वियसली नाउ आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर यू। मेरे को नॉलेज था कि आप ही हो शायद, इसलिए मैंने पूछा कि वेयर आर यू? सो आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आई अंडरस्टूड, आई विल रिमेंबर यू। यस, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट नाइट। एंजॉय योर सेशन। आपको अगर बीच का कुछ इंफॉर्मेशनल जानना है, तो आप लोग दोबारा से इस सेशन को देख सकते हैं, बिकॉज़ ये रिकॉर्डेड है, तो इट विल बी देयर। आप लोग उसको आराम से बैक करके भी आप आराम से देख सकते हैं कि भाई हमने कौन-कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हाँ, with this note, I really want to end this session, and I had a great session with you people.
गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। बिग फैन सर, ये कौन है? अवैश घानी, किसका बिग फैन है भाई तू? हाँ। गुड नाइट गाइस। चलो, विल मीट एवरीबॉडी वेरी सून। चलो, गुड नाइट गाइस।